and more energy means prices should, come down. Clearly, for a country like India, which is both consumer and producer, there are some of my oil marketing companies who get upset every time the price comes down because their balance sheets don't show that. But as an Indian and as a line minister, I am very happy with prices coming down. My friend, my first point is there has never been a shortage of energy in the world. I mean, not now. There is more than enough energy available. Prime Minister Narendra Modi pitched the progress of India's artificial intelligence ecosystem in Paris, where he co-chaired the AI Action Summit alongside French President Emmanuel Macron. Modi is in France for the first leg of his two-nation visit. Addressing the summit, he said that nations must pull together their resources and talent and develop open-source artificial intelligence systems that enhance trust and transparency. He said that India was willing to share its experience and expertise to ensure that the future of AI belonged to everyone. US Vice President J.D. Vance also spoke at the summit. He said that excess regulation of the sector can kill the industry. The next edition of the AI Summit will be held in India later this year. Governance is not just about managing risks and rivalries. It is also about promoting innovation and deploying it for the global good. So, we must think deeply and discuss openly about innovation and governance. I believe that this is exactly the challenge that we face with artificial intelligence. Succeeding in mastering what artificial intelligence is and its implications in many sectors, all while serving humanity. We believe that excessive regulation of the AI sector could kill a transformative industry just as it's taking off, and we'll make every effort to encourage pro-growth AI policies. And I like to see that deregulatory flavor making its way into a lot of the conversations this conference. US President Donald Trump's top economic advisor, Kevin Hassett, has criticized India's tariffs. In an interview with CNBC, he called India's tariff structure enormously high. He also added that these tariffs are a major issue that Prime Minister Narendra Modi will have to address during his upcoming visit to the US. Talking specifically about tariffs, just recall that almost every trading partner has much higher tariffs than we do. In fact, the only trading partner that's about where we are, and there's Canada and Mexico who are part of the trade deal, but outside of that, the UK has about the same tariff we do. The EU it's 2 to 3% higher. Taiwan it's 10 or 11%, and India, and we're meeting Modi soon, has got a lot to talk about with the president because they have tariffs that I think the trade-weighted average is a little bit short of 20. Now I'm running it out of my head, so don't give me a Pinocchio. But they have high rates that are enormously high. They're lockout rates. And so President Trump believes that at the very least, everybody should agree that if they're charging us 20, then we should charge them 20. And then if they go down, we'll go down. But that's the idea of reciprocity in the tariff space. Shares of Adani Group companies gained today in a downbeat market. This after US President Donald Trump signed an executive order to pause the enforcement of the law used to launch a bribery investigation against the Adani Group. The order directs the Department of Justice to put the Foreign Corrupt Practices Act on hold. Remember, the act prohibits American companies and foreign firms from bribing officials of foreign governments to obtain or retain business. Shares of Adani Power also rallied in early trade. This development comes after reports suggested that the Bangladeshi government asked the company to resume supplies from its plant in India. The company had halved its supply to Bangladesh due to delay in payments in October last year. Remember, Adani Power signed a 25-year contract under former Prime Minister Sheikh Hasina in 2017. The company has been supplying power from its $2 billion plant in Jharkhand.
Vodafone Idea reported a stable set of numbers with losses narrowing to a little over 6,600 crore rupees on a sequential basis. Revenue rose nearly 2% while EBITDA grew 8.2%. Average revenue per user rose to 173 rupees while the debt from banks reduced by 53 billion rupees during the last 1 year and stood at 23.3 billion rupees. Billionaire Elon Musk and a group of investors made an unsolicited bid of nearly $100 billion to acquire ChatGPT maker OpenAI. Company CEO Sam Altman responded, saying that he will not accept the deal and mocked Musk by offering less than $10 billion to buy Twitter. Elon Musk's surprise bid to buy OpenAI is the latest episode in his ongoing feud with Sam Altman. Elon Musk! A consortium led by Elon Musk said on Monday it has offered $97.4 billion to buy the nonprofit that controls OpenAI. It's another attempt by the billionaire to block the artificial intelligence startup from transitioning to a for-profit firm. Musk's bid is likely to ramp up a long-standing feud with OpenAI CEO Sam Altman over the future of the ChatGPT maker. Altman on Monday posted on X, quote, "No thank you, but we will buy Twitter for $9.74 billion if you want." Musk co-founded OpenAI with Altman in 2015 as a nonprofit, but left before the company took off. He went on to found the competing AI startup xAI in 2023. OpenAI is now trying to transition from a nonprofit into a for-profit entity. It says that restructure is required to raise the funds needed to develop the best AI models. Musk's new offer is only his most recent attempt to throw a wrench in those plans. In August last year, Musk sued Altman and others, claiming they broke contract by putting profit ahead of the public good in the push to advance AI. Then, in November, he tried in court to block OpenAI from converting to a for-profit structure. The consortium led by Musk that is now trying to buy OpenAI's parent nonprofit includes xAI and several investment firms. Were a deal to go through, xAI could merge with OpenAI, according to the Wall Street Journal, which first reported Musk's offer earlier on Monday. Aside from any antitrust implications, a deal of this size would need Musk and his consortium to raise enormous amounts of funding, according to an uninvolved. अंक 6 की अगर बात करें यानी कि आप किसी भी महीने की 6 तारीख को 15 तारीख को या 24 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 6 होता है. Rocket company SpaceX, which is worth tens of billions of dollars. Speaking to CNBC on the sidelines of the AI Action Summit, Altman said that Musk is trying to slow down a competitor with his bid. I think it's to slow down a competitor and try to catch up with his thing, but I don't really know. Yeah, but you know well, right? To the degree anybody does. Coming up on the India Business Hour, US President Donald Trump issues an ultimatum to Hamas after he suspends the release of Israeli hostages alleging ceasefire violations. And you can also catch all CNBC TV 18's news and updates on Facebook, X, Threads, Instagram, and JioCinema. Rajan's Ivana is a realization of our dream to add value to the lives of my well-wishers and their families. It is my way of giving back the love and affection you have given me. We invite you to live your dream life at Rajan's Ivana. Well played. As long as we have the domestic flows which are robust, and there the key indicator to watch out for is the SIP flows. I think as long as the SIP flows are adequate or in line with what we are seeing, we have no reason to be worried or concerned about. We saw total activity of around $15 to $18 billion. In 24, we saw around circa $40 billion.
In 25, we could see as high as $50 to $55 billion of sale through various corners. So that's the supply that is going to hit the market. I'm committed to buying and owning gas. As far as us rebuilding it, we may give it to other states in the Middle East to build sections of it. Other people may do it through our auspices, but we're committed to owning it, taking it, and मार्केट में ऐसे ही ठोकर खाते रहोगे अगर आपने इंडिकेटर्स को फॉलो करना नहीं। नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। एक मंगलवार का दिन, लेकिन भारतीय बाजारों में सिचुएशन थोड़ी सी अमंगल दिखाई पड़ रही है, जहां पर आज आपको इंडेक्स फ्रंट पर तो शायद कुछ भी ना दिखाई पड़े, कोई भी ऐसा बड़ा फॉल इंडेक्स पे नहीं है, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप है या स्मॉल कैप है तो आपको एक बहुत ही सीवियर डैमेज मार्केट में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 199 शेयर सिर्फ एडवांसेस में और 2100 शेयर डिक्लाइन में है। ये इंडिकेट करता है कि हर एक चढ़ने वाले शेयर के सामने करीब करीब 11 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। इस इंटेंसिटी का फॉल मार्केट में दिखाई पड़ रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जो फॉल है उसमें अगर बढ़ने वाला शेयर सिर्फ 0.5% है तो गिरने वाले शेयर कहीं 5 से 6% के आसपास आपको गिरावट में दिखाई पड़ेंगे। और एक और फैक्ट ये भी है कि जो गिरने वाले शेयर हैं वो ऐसे शेयर नहीं है जो चले हैं। इनफैक्ट वो शेयर भी हैं जो बहुत चले हैं, वो शेयर भी हैं जो कम चले हैं, और वो शेयर भी हैं जो बिल्कुल नहीं चले हैं, वो भी आज टूटते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो एक सीवियर अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग मार्केट में आज आप देख रहे हैं, जिसमें फ्रंट लाइन इंडेक्स में डैमेज कम, मिड कैप में थोड़ा ज्यादा और स्मॉल कैप में कहीं ज्यादा डैमेज आपको दिखाई पड़ेगा। हाल के आईपीओ, एसएमई मार्केट सब में ही आज तेज बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी। तो अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में आज सेल ऑफ देख रहे हैं। इस बिकवाली में आपकी रणनीति क्या हो, इस पर हम बातचीत करेंगे। आस्था जैन हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से बातचीत करने के लिए। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मतलब एक अच्छी खासी सेलिंग मार्केट्स में आप देख रहे हो आस्था मैम, और ये जो सेलिंग है मतलब एक अच्छी आपको मतलब बाय कॉल मिल पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है? गुड आफ्टरनून सुमित। नहीं, बिल्कुल बहुत ही मुश्किल हो रहा है अभी तो कॉल्स देना और स्टॉक्स छाटना, क्योंकि आप भी देख रहे हैं सुमित, अक्रॉस द बोर्ड किसी भी स्टॉक को नहीं छोड़ा है। अपोलो हॉस्पिटल इतने अच्छे नतीजे, उसके बावजूद आज बहुत बड़ा फॉल हमने वहां पे भी देखा। तो नतीजे अच्छे हो कि नहीं, पॉजिटिव न्यूज हो कि नहीं, हर तरह से मुझे लगता है कि थोड़ी सी पिटाई सभी स्टॉक्स की हो रही है। सो बिल्कुल थोड़ा सा डिफिकल्ट है ऐसे में बाय कॉल ढूंढना। एक बात और बताइए आशा मैम, बहुत सारे रिटेल निवेशक आपको सुन रहे हैं और बहुत सारे रिटेल निवेशकों ने सिचुएशन शायद पहले कभी देखी भी ना हो, क्योंकि कोविड के बाद इस इंटेंसिटी का सबसे बड़ा फॉल आज ही हम देख रहे हैं। एक बड़ा बढ़िया फॉल मार्केट में देखने को मिल रहा है। सो इस इंटेंसिटी के फॉल के साथ जिनके पास ऊपर के लेवल पे शेयर है जो बेच नहीं सकते हैं, काफी गैप। ये लो, SMIFS में अपना डीमैट अकाउंट खोलो। SMIFS में तुम्हें मिलेगा कस्टमाइज्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग, PMS एडवाइजरी, म्यूचुअल फंड, IPO और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट जैसी बहुत सारी सुविधाएं। तो फिर शुभ काम में देरी क्यों? 40 साल का विश्वास, भरोसा और सुरक्षा। SMIFS के साथ अपने निवेश को बनाइए बेहतर और समृद्ध। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. उसमें सर पूरा पेमेंट दिखाना पड़ता है, तब जाके वॉचिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। एक हाई पेइंग सैलरी के लिए, बहुत बड़े प्रमोशन के लिए आपको आना चाहिए एडवांस एक्सेल के साथ AI और चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल करना। लेकिन 10 में से 9 लोगों को पता ही नहीं है कि एडवांस एक्सेल के साथ AI और चैट जीपीटी को कैसे यूज किया जाए। आपकी इस मुश्किल को आसान करने जा रहा हूं। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं। इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ AI और चैट जीपीटी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ सिखा दूंगा। इस स्किल को सीखने के बाद आप बड़े से बड़े डेटा को चुटकी बजाते ही मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपके बदले काम करेगा AI और सैलरी और प्रमोशन मिलेगा आपको। इस 3 घंटे के वर्कशॉप में आपकी सोचने का तरीका, रिपोर्ट्स बनाने का तरीका, फॉर्मूला यूज करने का तरीका टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह, मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ।
पिछले 16 सालों से मैंने 300 से भी ज़्यादा कंपनीज को ट्रेन किया है। एक दो कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, 300 से ज़्यादा। और अगर आप लोगों की बात करोगे तो मैंने 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पढ़ाने के बाद ये ऑनलाइन वर्कशॉप आपके सामने लेकर आया हूँ। ये कोई ऑर्डिनरी वर्कशॉप नहीं है कि ऐसे ही कोई भी पढ़ा रहा है। यहाँ पर पूरा एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा, आप उसे डाउनलोड करोगे। मैं एक फॉर्मूला आपको पढ़ाऊंगा, आप प्रैक्टिस करोगे। दूसरा फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस करोगे। पिवट टेबल पढ़ाऊंगा, आप प्रैक्टिस करोगे। डैशबोर्ड पढ़ाऊंगा, आप प्रैक्टिस करोगे। मेरे साथ आप प्रैक्टिस करोगे। 3 घंटे के अंदर आपको A to Z चीजें आनी ही आनी है। सर फीस नहीं बताए, फीस कितनी है? वैसे तो नॉर्मली दोस्तों इसकी जो फीस है 2999 है, मतलब 3000 के आसपास। लेकिन अगर आप इसे अभी ज्वाइन करते हो, स्पेशली आपके लिए एक लिमिटेड ऑफर है यहाँ पर 199 रुपीज, 200 रुपये में भी 1 रुपये। आप 200 रुपये के अंदर ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बोली हैं आप सीखोगे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, नीचे दिए गए लिंक पे अभी क्लिक करो। दोस्तों अभी नहीं तो कभी नहीं, हो सकता है कि ये वीडियो काफ़ी लोग देख रहे हों और वो इसे ज्वाइन कर लें और आपसे पीछे हों और आपसे आगे निकल जाएं। तो सच में करियर में सीरियस हो, AI चैट जीपीटी सीखना चाहते हो, एक बार खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो और मैं राज सिंह आप लोगों को वेलकम करता हूँ अपने इस वर्कशॉप के अंदर। आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं प्रियंका संभव। मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रवीण शर्मा और प्रवीण और मैं लेकर आते हैं आपके लिए मनी सेंट्रल की ये खास बातचीत, जिसमें प्रवीण हम दिन भर के एक्शन को कैच करने की कोशिश करते हैं और आज तो बहुत एक्शन वाला दिन रहा है। बिल्कुल, आज तो पूरा फोकस मार्केट्स पे रहा है। ट्रंप की पॉलिसीज का मार्केट पे इम्पैक्ट और पूरा बाजार में आज 10 लाख करोड़ का एक दिन में जो लॉस हुआ है वो आज की सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल, तो इस पर हमारा फोकस रहने वाला, क्योंकि ये सीधे खबर जुड़ी हुई है आपके निवेश से, आपकी जेब से। तो सारी खबरें एक तरह से जो है वो फिक्र पैदा करने वाली है और एक दूसरे से लिंक्ड भी है। मसला ऐसा है कि इकोनॉमी, कारोबार, बाजार के हिसाब से देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया में भूचाल आया हुआ है। ट्रंप के टैरिफ कार्ड ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। बाजार में हाहाकार हमने देखा है। FIIs में भगदड़ है और रुपए को बचाने के लिए रिजर्व बैंक डॉलर झोंकने में जुट गया है। सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां तूफानी तेजी बनी हुई है और वो है गोल्ड। तो गोल्ड की चमक बरकरार है। उधर मोदी अमेरिका पहुंच रहे हैं और वहां से क्या भारत के लिए आएगी गुड न्यूज, इन सब को हम समझने वाले आज मनी सेंट्रल में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रंप फैक्टर की ही। ट्रंप के टैरिफ वॉर की जो लहरें हैं ना वो भारत को बहुत परेशान कर रही है। ट्रंप अपने फैसलों से पूरी दुनिया में मारकाट मचाए हुए हैं और ये सिलसिला आज हमारे बाजारों में नजर आया। लगातार 5th डे था प्रवीण जब बाजार में हम इस तरह की गिरावट देख रहे थे। आप कह रहे हैं कितना लॉस हुआ? 10 लाख करोड़ का? 10 लाख करोड़ का लॉस एक दिन में सिर्फ हुआ है इन्वेस्टर्स को और हाल के वक्त की एक बड़ी गिरावट है। और जो ट्रेड चल रहा है लगातार 5 दिन से और उसके पीछे से FIIs की बिकवाली है, जिसमें $10 बिलियन की बिकवाली एक 30 दिन के ट्रेडिंग सेशंस पे हुई है। तो वो सारा मार्केट पे इस कदर भारी पड़ा है कि आज मार्केट बाजारों में दिखाई दी। 1000 पॉइंट से ज़्यादा सेंसेक्स गिरा है, लगभग 1.25% के आसपास निफ्टी भी डाउन है। और स्मॉल कैप्स की अगर हम गिरावट देखें, मिड कैप की गिरावट देखें तो वो और ज़्यादा तगड़ी नज़र आती है। तो बाज़ारों में एकदम मेहम कहें या हम ब्लड बाथ कहें वो नज़र आ रहा है। ट्रम्प, FIIs, कई फैक्टर ऐसे हैं जो मार्केट पे आज भारी पड़े हैं। तो 5वां दिन बाजार में फिर से बहुत बुरी गिरावट। आप ही सोचिए कि मंगलवार का ये दिन जो है उतना मंगल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं रहा। प्रवीण भी बता रहे थे 10 लाख करोड़ रुपए का लॉस, बहुत बड़ा लॉस है। सेंसेक्स 1018 अंक की गिरावट के साथ 1% से ज्यादा की गिरावट। निफ्टी में भी हमने देखा 300 अंकों की गिरावट रही है। 1.32%
अगर हम इसके परसेंटेज वाइज देखें, मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में भारी गिरावट, बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 3.4%, मिड कैप 100 इंडेक्स 3% गिरकर बंद हुआ है। और इन सब का असर जो है हमने म्यूचुअल फंड्स पर भी देखा है। वहां पर भी आज जो मिड कैप और स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं वहां पर जो पोर्टफोलियोज हैं वो रेड में आ गए थे। और याद कीजिए 2 दिन पहले एक बड़ी वार्निंग जो है आईसीआईसीआई प्रू के सीआईओ भी दे रहे थे। तो बाजार पर आखिर क्या ट्रंप की ऐसी क्या बात है जो टैरिफ को लेकर इतना डर, जब ये लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री भी वहां पहुंच गए बात करने के लिए, फिर भी इतना खौफ? नहीं, पीएम जरूर पहुंच रहे हैं, आज कल पहुंच जाएंगे अमेरिका, लेकिन उससे पहले ही जो ट्रंप ने ऐलान कर रखे हैं, जो उन्होंने मंशा जाहिर की थी 20 जनवरी को जब ट्रंप गद्दी नची हुए, ताजपोशी हुई, उसके बाद से पूरी दुनिया डरी हुई है कि अब लागू होने शुरू होंगे ट्रंप के जो फैसले हैं। उसमें इमिग्रेशन के फैसले हैं और दूसरा बड़ा फैसला उनका टैरिफ का है, जिसमें उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम इन पे बिल्कुल हाल में 25% की ड्यूटी लगा दी है। उसके अलावा उन्होंने एक और बात कही है कि हम जो भी कंट्रीज हैं वो जिस तरह का टैरिफ हमारे ऊपर लगाए हैं हम उसको रेसिप्रोकेट करेंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ को हम लगाएंगे। आपका अगर एक पानी की बोतल अगर आप अमेरिका को दे रहे हैं उस पर 10% की टैरिफ लगा रहे हैं, तो अमेरिका अगर आपको एक पानी की बोतल बेच रहा है तो अमेरिका भी उस पर 10% की ही ड्यूटी लगाएगा। ये चीज किन के लिए खराब होगी? ये चीज हर उस देश के लिए खराब होगी जिसका अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है। भारत हो गया, चीन हो गया, इसीलिए भारत को लेके चिंताएं ज्यादा हैं। मार्केट पे कल भी इस चीज का असर दिखाई दिया था कि ट्रंप बड़ा ऐलान कर सकते हैं और मार्केट्स आज भी इसी वजह से पूरा मार्केट एकदम से धराशायी होता हुआ हमने आज देखा। I'm sorry, I doubted you, told you stupid, said you'd never work. But in the morning, while I was getting ready for office, $45,000 in profits in 15 minutes. You're definitely smarter than most traders I know. Why are you sweet talking your phone? You remember how I used to spend hours analyzing charts, deciding when to buy and sell, and still end up in losses? Yeah, so? Now AI does everything. Market analysis, finding trades, booking profit. It does it all. Wait, that just happened? Is this a secret app or a hidden website? Share the secret with me too, bro. No secret, bro. Even you can learn how to trade and invest effortlessly in the stock market by using AI in the 3-hour workshop by SpringPad. So register now and grab your seat only for ₹9. And hurry up. Last few seats left. दोस्तों, अभी लास्ट ईयर ही मेरे बहन की शादी हो गई और उसने इतनी सारी डिग्रीज, इतनी सारी क्वालिफिकेशन सीखने के बाद भी घर में एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। पूरी जिंदगी एक तरीके से करियर पॉइंट ऑफ व्यू बर्बाद हो गई। ऐसे तो न जाने कितने लोगों ने अपने घर पर डिग्री लेने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया, जॉब पर नहीं गए। कितने सारे लोग रिटायर्ड हैं, उनके पास इतना सारा वैल्यूएबल नॉलेज है लेकिन वो घर पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको सैटरडे संडे हॉलिडे होता है, फिर भी वो घर पर बैठे रहते हैं और एक तरीके से सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में नहीं सोचते। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहते हो, एक दूसरी आमदनी का तरीका, या फिर अगर अपने लाइफ के मुझे लगता है ये पूरा हफ्ता बाजारों के लिए ऐसा ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि सोमवार और मंगलवार के फॉल के बाद हम बुधवार को देखेंगे कि एवरीथिंग इज ऑल इज वेल। बिल्कुल, कल देखिए मोदी जी की यूएस विजिट स्टार्ट होगी। आज वो फ्रांस में है, कल वो अमेरिका पहुंचेंगे। परसों उनका यूएस प्रेसिडेंट के साथ, ट्रंप के साथ मीटिंग है और ट्रंप के एडमिन के जो एक बड़े अफसर हैं वो पहले ही कह चुके हैं इस विजिट से पहले कि मोदी के साथ बातचीत करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि सीधे तौर पे ट्रेड में किस तरह की रियायतें भारत देगा
किस तरह की रियायतें अमेरिका देगा, इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम मसलों पर बात होगी। एजेंडा पैक्ड पूरा मोदी की विजिट होगी वहां पे, और फिर वो वहां से क्या भारत के लिए राहत निकाल कर लेके आते हैं, इस पे सबकी नजरें टिकी होंगी, और तब तक बाजार भी इसी तरह वोलाटाइल रह सकता है। वैसे एक और फैक्टर जिसने बाजार का मूड बिगाड़ा वो थी विदेशियों की बिकवाली। एफआईआईज की जो सेलिंग है वो उसका पेस भी कम नहीं हुआ। आंकड़े बता रहे हैं कि 2025 की शुरुआत के 30 ट्रेडिंग सेशंस में एफआईआईज $10 अरब की बिकवाली कर चुके हैं। एक और बड़ा नंबर, अभी हमने बात की कि भारतीय निवेशकों को कितना नुकसान हुआ, 10 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है, और अब देखिए $10 अरब की बिकवाली एफआईआईज की। 2024 में भारतीय कंपनियों में एफआईआई होल्डिंग घटकर अब 16% पर आ चुकी है, जो कि अगर हम इसे फाइनेंशियल ईयर 2014 और 20 के दौरान कंपेयर करें तो 20% के पीक पर ये पहुंच गई थी। हालांकि घरेलू इन्फ्लो ने बाजार को बचाए रखा है और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 10 साल के हाई पर पहुंच गई है। बजट के ऐलान, रेपो रेट कट के बावजूद भी एफआईआईज की बिकवाली जारी ही रही है। अक्टूबर से अब तक एफआईआईज जो है वो 2.75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। तो एफआईआईज लग रहा है रूठे हुए हैं, और उनकी ये जो नाराजगी, मतलब कुछ भी कर लो कोई असर नहीं पड़ा। एफआईआईज बिकवाली ही करते जा रहे हैं प्रवीण, ये वरिंग ट्रेंड है। बिल्कुल वरिंग ट्रेंड है, और इसी वजह से बाजार उबर नहीं पा रहा है। 27 सितंबर का जो मार्केट का पीक था उसके बाद से बाजार लगातार नीचे बना हुआ है और वहां से रिकवर नहीं हो पा रहा है। एफआईआईज के मामले में अगर हम देखें और इस चीज को समझने की अगर कोशिश करें कि आखिर एफआईआईज बेच के क्यों जा रहे हैं, तो जितने एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका अब एफआईआईज के लिए एक ल्यूक्रेटिव मार्केट बन गया है। जब से ट्रंप आए हैं तब से ये हुआ है कि वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, दूसरी चीज बॉन्ड यील्ड वहां पे अमेरिका में बढ़ रही है, और तीसरी चीज मार्केट और प्रॉमिसिंग लग रहे हैं अमेरिका के। एक और बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने लगातार अपना जो पूरा उनका कैंपेन किया उसमें उन्होंने एक बात साफ तौर पे कही कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस बात से अब जो पूरे एफआईआईज है उनको लग रहा है कि इमर्जिंग मार्केट, क्विट इमर्जिंग मार्केट्स का एक जो उनमें नारा चल पड़ा है कि बस अब इमर्जिंग मार्केट्स को छोड़ के निकल जाना है, और भारत उसी चीज का शिकार हो रहा है। अगर कुछ बेटर चीजें इस लिहाज से कि कुछ सेटलमेंट हो मार्केट्स में, आगे चल के कुछ अगले 2-3 महीने में चीजें जाके स्थिर हो, ट्रंप की पॉलिसीज पूरी दुनिया समझ पाए, उसके बाद जाके मार्केट्स में फिर से रीअलाइनमेंट होना शुरू हो सकता है, जहां पे कि एफआईआईज को भारतीय बाजार या दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स बेहतर नजर आए। एक तो टैरिफ वाला मसला भी है। टैरिफ जो लगा है वो पूरी दुनिया के बाकी देशों के लिए मुश्किलें ही पैदा करने वाले हैं कंपनियों के लिए। तो ऐसे में एफआईआईज के लिए उनको लगता है कि अपने घरेलू मार्केट्स ही जाना ज्यादा बेहतर है। बैक टू होम और क्विट इमर्जिंग मार्केट जैसा नारा जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर एफआईआईज का निवेश देखें तो फिर देखेंगे आप बार बार वो नेगेटिव ही आपको ट्रेंड नजर आ रहा है। एफआईआईज का निवेश का ट्रेंड केवल दिसंबर में पॉजिटिव रहा है, लेकिन बाकी समय में नेगेटिव रहा, और बाजार अभी तक इतना बिग फॉल इसलिए भी नहीं दिखा रहे थे कि डीआईआईज का सपोर्ट मिल रहा था। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड में जो पैसा आ रहा था वो संभाले हुए था, लेकिन अब वहां पर भी नर्वसनेस आ गई है। हाँ, नर्वसनेस आ गई, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो शायद जो दिसंबर का आंकड़ा देखा था हमने एसआईपीज इनफ्लोज का, वो 26,000 करोड़ पे था, और वो शायद अब तक का सबसे रिकॉर्ड नंबर है। मतलब इसका यह है कि जो घरेलू इन्वेस्टर्स हैं वो अभी तक इस चीज पर अड़े हुए हैं कि नहीं, ये जो गिरावट है ये शॉर्ट टर्म है, ये ज्यादा लंबी टिकने वाली नहीं है, एसआईपीज में बने रहे। इन्वेस्टर्स मैच्योर हो गए हैं बेसिकली। अगर हम पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें, जो एएमसीज हैं उनके पास कैश बहुत है, कैश बहुत है। एयूएम आप देख लीजिए 68 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। वो कैश का करना क्या है, उस कैश को कंपनियों, जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं उनको मार्केट में ही लगाने के ऑप्शन है। बहुत ज्यादा कैश पे बैठ के रह नहीं सकते, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट्स में उसकी वजह से बाजार टिके हुए हैं। अदरवाइज जो 27 सितंबर के बाद के हालात है उसमें मार्केट इससे कहीं ज्यादा गिरावट का शिकार हो चुके होते। तो चलिए, और यही जो डिप है ये सिप करने वालों के लिए एक अच्छा मौका होता है, तो फिर डिप में सिप इस नारे को अपनाइएगा। बाजार में हाहाकार जो है वो किसी भी खबर पर
कम नहीं हो रहा है। और इसका एक एग्जाम्पल आज जो हमने देखा कि रुपया आज थोड़ा संभला है, संभलने के पीछे क्या वजह ये भी आपको बता देते हैं। मंगलवार को वैसे एक जो रुपया वो 1% चढ़ा और नवंबर 2022 के बाद रुपए की ये सबसे बड़ी तेजी रही है। रुपया संभल कर जो है 86.63 रुपए प्रति डॉलर के लेवल पर आ गया है। एक दिन पहले रुपया 87.95 रुपए के लाइफ टाइम लो पर चला गया था। अब सवाल ये है कि रुपए में आज मजबूती कैसे आई। अब इन फैक्टर्स को समझिए। असल में रिजर्व बैंक ने सोमवार को करीब 4 अरब डॉलर की बिकवाली की है और यही जो है रुपए में एक हल्की सी मजबूती बहुत लंबे समय के बाद दिखा रही है। तो रिजर्व बैंक ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है। अब वो रुपए को सपोर्ट करने के लिए उतरते हुए एकदम बैकफुट से फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। प्रवीण, ये कहना सही होगा? बिल्कुल। देखिए, आरबीआई जो आपने बताया कि 4 अरब डॉलर की बिकवाली की है, ये एक बड़ा नंबर है, मंडे को की है। और ये बात इस चीज को भी दिखाती है कि किस तरह का हड़कंप अब सरकारी हलकों में और आरबीआई के लेवल पर भी है। जब नए गवर्नर आए थे उसके पहले इस बात की खबरें आई थी कि जो नए गवर्नर है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो करेंसी मार्केट में इंटरवीन करना नहीं चाहते। उन्होंने ये भी कहा था कि मार्केट्स को हम जो करेंसी है उसको हम उसके हाल पे ओपन मार्केट पे छोड़ना चाहते हैं कि जिस तरह का मार्केट फोर्सेस के हिसाब से रुपए की वैल्यूएशन तय हो, चाहे वो गिरे या संभले। लेकिन बाजारों में पिछले 5-6 दिन से गिरावट आ रही है, एफआईआईज भाग रहे हैं और ऐसे में अब रिजर्व बैंक को मुझे लगता है कि ये लग रहा है कि अब स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत है, रुपए को बचाने की जरूरत है। क्योंकि ये चिंता, रुपए अगर और डेप्रिशिएट होता है तो वो पूरी इकोनॉमी के लिए, पर्टिकुलरली जब हम एक इंपोर्ट ओरिएंटेड देश है जहाँ पे कि हम क्रूड, गोल्ड, ज्यादातर चीजों का इंपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे भारत के लिए रुपए को बचाने की भी एक मजबूरी समझ लीजिए आप, वो हो सकती है। और इसीलिए आप देखिए कि जो फॉरेक्स रिजर्व था वो करीब 750 बिलियन डॉलर से अभी घट के 630 बिलियन डॉलर पे आ गया है। हालांकि मजबूत है, लेकिन फिर भी वहां पे भी हमने गिरावट देखी है। और अब आरबीआई लगता है अपने एक्शन मोड में आया है, जहां पे कि वो रुपए को अब और गिरने नहीं देना चाहता और इस जरिए से बाजार को भी थामने की एक कोशिश ये हो सकती है। लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, इस पर कई सवाल है, क्योंकि ट्रम्प के इरादे पर सब कुछ अब डिपेंड करेगा और उनको समझना और वो क्या अगला स्टेप ले रहे हैं ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज उन्होंने एक कदम उठाया ही है और उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो दुनिया भर के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे। सवाल ये है कि भारत पर इसका क्या असर होगा। आप भी बात कर रहे थे रेसिप्रोकल टैरिफ का, जो ट्रम्प एकदम नजर आ रहा है कि भाई वो टैरिफ में कुछ ना कुछ तो खेल करने वाले हैं। ये कितनी चिंताजनक बात होगी हमारे लिए, क्योंकि कई बार उनके ऐसे स्टेटमेंट्स आए कि भारत जो है वो टैरिफ्स का किंग है। यहाँ पर उन्होंने टैरिफ को लेकर के ऐसे कभी समझ में नहीं आता कब सीरियसली बोल रहे हैं और कब मजाक में बोल रहे हैं, पर ऐसे उनके वक्तव्य आते रहे। नहीं, वो तो ट्रम्प तो कह चुके कि भारत सबसे बड़ा एब्यूजर है टैरिफ का। तो एब्यूजर का जब आप, और बहुत सारे जो ग्लोबल लेवल पे माना भी ये जाता है कि भारत के टैरिफ सबसे ज्यादा सख्त हैं। लेकिन नोमरा और मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है, वो ये बताती है कि भारत पर और थाईलैंड पे सबसे ज्यादा खतरा है। अगर ये टैरिफ आते हैं तो इन पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका है। हालांकि स्टील की अगर हम बात करें तो स्टील में भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 5% हिस्सा ही यूएस जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम के मामले में ये चीज थोड़ी सी परेशान करने वाली है पूरी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उनका 12% जो एक्सपोर्ट है वो यूएस जाता है। तो इस हिसाब से हमारे एल्यूमिनियम और स्टील, जहां पे कि अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं 25% के, वहां थोड़ा असर हो सकता है। इसका एक फैक्टर और है, कुछ एक्सपोर्टर्स का ये कहना है कि वो $1 बिलियन का इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ सकता है। लेकिन बहुत सारे जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत पे अब डंपिंग स्टार्ट हो सकती है एल्यूमिनियम की, स्टील की। वजह उसकी ये है कि जो अमेरिका में जो सामान चीन का नहीं पहुंचेगा, स्टील या एल्यूमिनियम, वो सामान भारत में डंप होगा। और इसके लिए इंडिया ने अगर समय रहते उपाय नहीं किए तो भारत एक चीन का स्टील और एल्यूमिनियम या दूसरे जो मेटल्स है उनका एक डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा। इसकी
बातें बार बार पीछे से भी चल रही है। बिल्कुल, सेफगार्ड ड्यूटी पर काफी लंबी बात चली, पर हमने कुछ देखा नहीं। स्टील मैन्युफैक्चरर ने इसकी मांग की थी। बिल्कुल, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि आप, पहले से ही आ रहा है, चाइना का स्टील भारत में बुरी तरह से आ रहा है, पहले से डंप्ड है। और अगर ऐसा टैरिफ चीन पर इम्पोज करते हैं, भारत पर वो कितना टैरिफ लगाए इसका तो भरोसा नहीं, पर चीन पे तो लगने वाला है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। और अब खतरा ये कि उसका सामान यहाँ जो सामान यहाँ डंप अब वो होगा। ज्यादा बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका है, लेकिन अब वहां अगर रास्ता रुका 25% टैरिफ की वजह से, तो फिर वो आना शुरू होगा भारत या कुछ और मुल्कों में। भारत क्योंकि दूसरा एक बड़ा मुल्क है जो स्टील का कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर है इसका, तो भारत पे इसका इस तरह से असर पड़ना स्वाभाविक है। तो चलिए, ट्रम्प की बात तो बहुत हो गई, लेकिन अब कुछ अच्छी बात कर लेते हैं। एक एसेट जो अभी भी जबरदस्त रिटर्न दे रहा है, और वैसे उस एसेट के साथ बात भी यही होती है, जब चिंताएं बढ़ती हैं, जब जियोपॉलिटिकल टेंशन और इकोनॉमिक फैक्टर्स जब नेगेटिव होते हैं, तो गोल्ड चमकता है। और दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा गंवा रहे हैं, लेकिन एक ठिकाना ऐसा है जहां इन्वेस्टर्स को फायदा हो रहा है, और वो है गोल्ड। मंगलवार को गोल्ड 86,000 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। एक दिन पहले स्पॉट मार्केट में गोल्ड 2500 रुपए चढ़ा था। गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए ना सिर्फ 2024 बढ़िया गया है, बल्कि 2025 में भी रिटर्न के मोर्चे पर चौके छक्के ही अभी तक लग रहे हैं। 2025 में अभी तक केवल 2 महीने भी पूरे नहीं बीते हैं, 1 महीने और कुछ दिन बीते हैं, और अब तक गोल्ड 11% का रिटर्न दे चुका है। इसके उलट सेंसेक्स केवल 1.5% से जो है वो नीचे ही है, इनफैक्ट नेगेटिव में ही है सेंसेक्स। गोल्ड आगे बढ़ रहा है। तो पिछले साल की अगर मैं बात करूं 2024 में, तब भी गोल्ड हॉट कमोडिटी बना हुआ था, 21% रिटर्न दे चुका था। तो गोल्ड भाग रहा है, और मुझे लगता है प्रवीण, ये फैक्टर हमेशा हमने देखा है गोल्ड को। वो बीच में एक समय सिर्फ रहा था जब इक्विटी और गोल्ड एक साथ चढ़ रहे थे, लेकिन वो खत्म हो गया, और इन दोनों का जो स्वभाव है कि इक्विटी नीचे जाता है, गोल्ड ऊपर जाता है, वही हमें अब दिख रहा है बाजार में। हाँ, और वही चीज है, जब से ट्रम्प आए हैं, वो यहाँ पे भी गोल्ड भी अगर भाग रहा है तो उसके पीछे ट्रम्प का फैक्टर है। कल हमने देखा था कि लगभग 2,500 रुपए गोल्ड के दाम ऊपर चढ़े थे, और आज 86,000 रुपए पर 10 ग्राम ऑल टाइम हाई पर है। ऑल टाइम हाई पे गोल्ड पहुंच गया। तेजी की सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रम्प की जो अनसर्टेन पॉलिसीज हैं, उससे पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स भी घबराए हुए हैं, परेशान है। उनको क्या लग रहा है? उनको लग रहा है कि सेफ हेवन क्या है? सेफ हेवन में जो गोल्ड माना जाता है कि ये सबसे सुरक्षित एसेट है, किसी भी टाइम आप इसको लिक्विडेट कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया इस वक्त लगी हुई है कि किसी तरह गोल्ड खरीदा जाए, और गोल्ड खरीदने की वजह से एकदम से गोल्ड के दाम स्पाइक हुए हैं। सिर्फ महीने भर में 11% का रिटर्न, बाजार 1.5-2%। अगर आज की आप गिरावट देख लेंगे तो लगभग 2.5% की गिरावट होगी सेंसेक्स या निफ्टी में, और उसी की तुलना में इसके 11% से ज्यादा का रिटर्न है। तो इस हिसाब से ये केवल 1.25 महीने अभी केवल 1.25 महीने में बिल्कुल गोल्ड, ये साल गोल्ड के नाम रहने वाला है, अभी तक यही लग रहा है। पिछले साल के आखिर में लगभग 76,000 पर 10 ग्राम का था गोल्ड का भाव, और अभी 86,000 है। आप समझिए 1.25 महीने में 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का फायदा अगर आपको हो रहा है, तो वो अच्छा खासा बेनिफिट है। जिसने भी 10 ग्राम या 100 ग्राम गोल्ड खरीदा होगा, वो आज अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, पिछले साल जब भी हम बात कर रहे थे कमोडिटी के एक्सपर्ट से, वो यही कह रहे थे कि 2025 में हम गोल्ड को जो है 1 लाख तक जाते हुए देख सकते हैं। तब हमें लग रहा था कि ये शायद कुछ ओवर प्रिडिक्शन हो रही है, लेकिन अभी तक तो माहौल पूरा बन गया है। नहीं, अब तो ये लग रहा है कि क्या फरवरी में ही गोल्ड 1 लाख पे पहुंच जाएगा। अब तो बार-बार एंड तक भी जाएंगे नहीं हम। हाँ बिल्कुल, अब तो बार-बार सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसी महीने गोल्ड, अगर ट्रम्प की तरफ से और कुछ ऐसी पॉलिसीज आ जाती हैं जो दुनिया in today's trading session. But on that note, we're going to slip into a very short break, and after the break, we'll get your details on Finance Minister Nirmala Sitharaman and RBI Governor Sanjay Malhotra address the media
after the customary post-budget. In fact, if you're looking at the net number, net sale was just about 470 crores from FPIs, and net buying by domestic institutions was about 454 crores. At a net level, it's a lot better than we had. But if you're looking at the total tally so far this year already, the net selling, there's no respite. We thought 2025 will get a respite. That's not happening. Look at that big number, over 85,000 crores sold in the cash markets. In terms of news flow, of course, we'll have the tail enders of the earnings season. We'll talk about that. I'll once again watch out for Hitachi Energy. This is not entirely unknown by the market because they were talking about another big HVDC order, and it seems it's coming through. And it's the same consortium, BHEL and Hitachi, and they've won this project from Adani Energy Solutions. This is a link for renewable energy transfer from a place in Rajasthan to Uttar Pradesh. Large order, and we know the market's gotten. I mean, this stock has been completely re-rated, Hitachi, on the back of these HVDC orders. So let's see if there's any further announcement, any further excitement on today's announcement. But Nigel, Nifty's been in a congestion zone, trying to take out 23,800, not quite there. Well, that's right. And the global setup is a little bit gloomy, but I'm a little bit positive on the markets. And there are three big reasons out here. First is the state election outcome. Well, that is positive because there were some jitters getting into the weekend. What's going to be the outcome of the Delhi elections? A small state, but you want the BJP who's ruling at the center to rule in more states as well, because that ensures some kind of policy continuity. So that is good news. The budget 2025, it addressed we had a problem in terms of economic slowdown, and they have addressed that, and also the RBI. So when you address a problem, that's rather good news. And both the government of India as well as the RBI, they have put their hand out and they're willing to get counted. So all those three are positives. What's uncertain? Trump's tariffs. That can swing any which direction. Even if you look at some of these metal companies, yes, they're going to most analysts, they're scratching their head. They're wondering which way is it going to go, because there could be a supply shortage that's going to be out there, could push up prices. But the other sense, some of these countries will start pushing most of their supplies into other markets. So Trump's tariffs is a bit of an uncertainty. And what will big central bankers like the Fed as well as the Bank of Japan do from here on? Both those 2 points, they are uncertain. Looking at the FIs, what do they do in index futures? They sold a marginal amount in the cash market, but on the future side, on the short side, they added close to around 6,000 contracts, which takes the short position now to around 1.6 lakh contracts. Remember, sometime of last week, that net short positions had come down to around 1.4 lakh contracts. That's back to a negative. The FIs are net short by around 1.6 lakhs contracts, while the clients, they are net long. That's hovering around that 1.4 lakh contracts or thereabouts. So both of them on opposite ends. The two goalposts that I'm looking at, on the upside, the 23,800 call, well, that's the important mark. And on the downside, the 23,200 put, that's the important mark. So just plugging in the numbers from the options data and looking at the technical levels, you're getting your reference point. So on the upside, this 23,800 odd mark becomes a bit of a resistance zone. But since that's seeing some writing, the 20 DMA, that's the important mark on the upside. On the downside, you had your reference point at around that 20,200 odd mark. So that's the broad range that you're looking at. The bulls will want to go ahead and, break past the 23,850 odd mark, while the bears, they are looking to go down and, in fact, look at testing those recent lows. What about the Nifty Bank? That's got a reference point at around that 49,800 odd mark, which incidentally is the recent low that we saw. And it's got its work cut out, because at around the 50,800 mark, that becomes a bit of a resistance zone. So I think it's a bit of a positive bias. You'll want the Nifty to build on to the gains. The global picture is a bit murky, but otherwise you've got cues going in favor of the bulls on the domestic front. The stock that I'm looking at is ITC Hotels. That saw massive volumes. Now it's out of the Sensex as well as of the Nifty, and volumes are very, very high. So most of that selling that had to take place, that's got absorbed. I'll keep an eye out on that stock. Nearly 5 crore shares traded on the NSE itself. Okay, all right, got it. ITC is going to be on the radar as well. Thank you for that, Nigel. Let's get started then with the equity call of the morning. We have Aswad Damodaran coming in on the call, and he says the most expensive market in the world is India, and no amount of hand-waving about the India story can justify paying 31 times earnings, 3 times revenue, and 20 times EBITDA in the aggregate for Indian companies. Okay, that's pretty straightforward, saying the Indian market's still very expensive.
Absolutely, and that's someone who knows a thing or two about valuation, right? Now, Ed Yardeni is president at Yardeni Research. He's with us now to take some questions. Ed, good to have you with us here, back on the program. Prime Minister Modi will be meeting President Trump this week. You know, the general opinion before this budget has been that India is one of the most tariffed countries. I mean, in terms of sort of, high tariffs, import duties, etc. We've started to ease some of that in the 26 budget that was presented, the union budget which was presented. Do you think that'll dominate conversation when that meeting happens this week? What's your sense? I think it'll be a very important issue that will be certainly raised by President Trump. President Trump wants reciprocal tariffs, so he's going to go around the world, country by country, that's important to the United States as a trading partner, and basically start to negotiate on what kind of tariff relationships other countries want to have with the United States. I think what Trump is really trying to do is get tariffs reduced across the board and negotiate America's importance to other countries to accomplish that. But of course, there'll be other issues, including, of course, China's role in the world and whether India, which side India wants to be on the Chinese side or the U.S. side. And I guess the answer is India would prefer to be on neither side, prefer to be on its own side. But Trump may put some pressure on Modi to align more with American interests. Oh, Mr. Yardeni, yeah, and I think India is going to try and figure exactly that out this week when the high-profile meeting happens between the two leaders, right? It's just ahead of Valentine's Day, so maybe I don't know. We're hoping there'll be some love in the air, but we'll find out. on tariffs, however, from an equity market standpoint, I mean, this is real. Earlier, it was a lot of rhetoric, it was brinksmanship, but now it's getting real because those reciprocal tariffs from China, they're coming in. I was reading that out earlier. It's on coal imports, LNG, so on and so forth. So it's becoming a reality. At what point does it start hurting, U.S. equities in terms of sentiment? I was also looking at the future inflation projections, 1 year forward, inflation projections, and those projections are already surging. Yeah. Well, I think in the next few weeks, next few months, we're going to get a little bit more clarity on how much of this is negotiation and how much of this is going to be retaliation. Clearly, it's in everybody's interest to lower tariffs and to have freer trade, and the United States wants to participate in that kind of process. But if instead we get retaliation and an escalation of tariffs, that would be very bad for the global economy. During Trump 1.0, the tariffs did in fact slow global economic growth. The advantage the U.S. has right now is the U.S. economy is very, very strong, and certainly has a lot of economic clout vis-a-vis our trading partners. So I think there will be a lot of negotiations. I think there'll be a lot of ups and downs in this process. So I think what it means for the stock market in the United States is we're going to have choppy waters for a while. But I think by the second half of the year, some of these unknowns and uncertainties will be clarified. And I think on balance, I'm optimistic that the U.S. economy will be fine and that earnings will be fine and the market will go up along with earnings. So positive on the U.S. market side, and I think you've made that point as well earlier. You expect the S&P 500 maybe pull back a little bit, but ultimately head to around 7,000. I think that's the point you made the last time around. That's correct. That's my view. What about the U.S. dollar? Going by the tariff implementation, going by the economic data that's coming out there, it's cooled off a little bit from the recent peak, but you believe that it's headed higher from here on, and you're sticking to that stance that the Fed will not be factoring in any more cuts, no more cuts from the Fed in this calendar year? Yeah, I think there may be no more cuts this year. Maybe I'm currently in the none and done camp for 2024. I think the economy will continue to show enough resilience. I think on balance, all those employment numbers that came out on Friday, including lots of revisions, showed that the labor market doesn't really need lower interest rates. It's doing just fine without lower interest rates. So that should be a plus for the dollar. So should the relative strength of the U.S. economy compared to the rest of the world. And in a more immediate situation, higher tariffs do seem to push the dollar higher.
But meanwhile, we've got gold at a record high. We've got Bitcoin relatively volatile. There's the currency market isn't just foreign currencies. It's also gold. It's also Bitcoin. So there's a lot going on. But on balance, I think in terms of currencies, I think the U.S. is going to continue to be strong, especially relative to commodity currencies. All right, Ed, we leave it there. Thank you very much for joining us. It's a pleasure, and look forward to our next chat. It's always interesting. We'll take a quick break here, but let me just quickly run you through the corporate interactions which are lined up, and there's a lot. So 8:35, PG Electroplast Management joins in on the back of the third quarter numbers. Vikas Gupta. As always, 9 o'clock, the management of Zaggle Prepaid will be with us on the back of their third quarter numbers as well. Nitin Basina Vambit will be talking to us at 9:20 post-opening. Anisha of Mahindra Group will be speaking with us at 9:40 to discuss their earnings and the road ahead. 9:50, the management of VATech Vabag. You don't hear from them very often. That'll be the other management, and it's the economy with Lata, who will be in a conversation with Suresh Ganpati of Macquarie Capital on RBI policy, impact, banks, NBFCs, and more. So that's coming up. All right, well, time to slip into a quick break, but we have a lot of stock-specific action to track for you. We'll get to that in just a bit in our special top 10 segment. We'll look at LIC, NHPC, VATech Vabag, Fortis Healthcare, First Source Solutions, and Relicare. They'll be reacting to positive news flow. On the flip side, All India, Amara Raja, Honeywell, as well as Delivery will be reacting to negative news flow. ये जो 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी दोबारा आई है, ये बहुत बड़ा बनवास काट के आई है। केजरीवाल तो गए, केजरीवाल का पॉलिटिकल करियर भी खत्म है। केजरीवाल जेल में भी जाएंगे, जो पैसा कमाया था इसको एंजॉय करने और उनके पास
Welcome back. So the cues across Asia are pretty mixed. We've been saying that a lot of the markets are, blinking red and green. The Chinese markets are actually doing pretty okay, considering they're at the center of the whole, tariff talk and tariff storm. Look at that. The Hong Kong market is up about 1% at this point in time. The mainland Chinese market is also higher. Let's pull up the implied open and see what we are getting. It's, there we go, about 62 lower. So going more with the caution on the implied open. Let's get down to individual stocks. Plenty of names to track. And as always, we have our team standing by with the CNBC TV 18 list of top stocks for the morning. Guys, good morning to all of you. Yash, let's open with you. LIC numbers, how do they look? Well, Churvi, as far as LIC is concerned, there has been degrowth across parameters on a year-on-year basis. But I'm still going with green on the stock. That's because if you compare it to what Street was anticipating, the top line has been a miss in terms of total APE and the retail APE, but the operational performance in terms of value of new business and margins have come ahead of Street estimates. The Street was anticipating a higher miss on the margins, but the miss on the margins is much smaller than that, about 64 basis points. The margins have come in at about 19.36% versus 20%. This is one reason. The second reason is also the fact that the stock has corrected significantly. It's down 33% from its 52-week high and trading at its 52-week चेक कर लीजिए लाइव प्रूफ मैं चेक करवा रहा हूँ ठीक है आपको आप कॉल अटेंड नहीं कर रहे हो इसलिए मैं लाइव प्रूफ चेक करवा रहा हूँ सर बार-बार चेक नहीं करवाऊंगा एंड वेरिफिकेशन जीएसटी चार्ज 1478 रुपए है जो ओनली फॉर 5 मिनट के लिए एक्टिव रहेगी 5 मिनट के बाद ये आपको रिटर्न कर दीजिए तो पेमेंट ऐड करके स्क्रीनशॉट ऐड कर दीजिए एंड 5 मिनट इंतजार कीजिए 3 मिनट 32 सेकंड में ये पेमेंट रिटर्न हो जाएगी सर quarter, a lot of one-offs, a lot of provisions that the company has made, and some key projects commissioning that was awaited continues. ये आपको रिटर्न कर दीजिए तो पेमेंट ऐड करके स्क्रीनशॉट ऐड कर दीजिए एंड 5 मिनट इंतजार कीजिए 3 मिनट 32 सेकंड में The core hydropower generation in the months of October, November, December were quite strong, which led to a revenue growth of almost 11.3%. Multiple one-offs, but however, EBITDA up almost 36% on a year-on-year basis. Margins 44.7 versus 36.6, and profitability impaired or marred by one-offs, especially much lower other income at 330 crore versus 495 crore. Profitably went down 50%. Now, the other important aspect to keep an eye out for was the interest expense. The interest expense this time around was almost 5.5 times higher at 650 crore, and this was at the back of multiple adjustments that the company paid. Prior period employee expenses of close to 200 crore and arbitration claims of close to 100 crores. Going with the green only on the back of the fact that there was some growth seen as far as hydropower generation is concerned, but the street will be worried about commissioning of key projects. Now, coming to Wartech Wabag, let's put this particular company into two separate developments that we're tracking. The first one is the results itself, and the second one is an order inflow update that the company has given. Let's have a look at the results. Top line grows. However, the street will be slightly worried about the margin compression that the company has seen even compared to Q2 as well as Q1. Revenues higher by 15%, EBITDA up almost 1.5%, but margins at 12.4% versus 14%, profitability higher by 11.6%. Now, the order book at the end of Q3 stood at 14,200 crore. Now, very interesting. Yesterday, the company announced that as part of a consortium, the total consortium won an order of a little over 3,250 crore. Now, this is for an independent sewage treatment plant and has come from Saudi Arabia. Remember, in December, the company had lost a large contract. Given the fact that they've received one more contract from Saudi, it will assuage a lot of investor concern. The management will be joining us later today, and we'll get a lot more details, especially as far as the order inflow outlook is concerned from Saudi as well as India. Well, as Vivek said, thanks Vivek for that. 9:50 is when you'll hear from the management of Wartech Wabag, so stay tuned for that. Well, Oil India and Amar Raja are going to be the other companies in focus. Sud is here with details. Good morning. Good morning, Prashant. So for Oil India, it was an all-round miss. Revenue was down 0.1% versus expectation of an increase. Even EBITDA has slipped 2% versus an expectation of 12% rise. And because of that, margin has slipped to 40.7% versus expectation of 46%. The reason? Crude realization has fallen 7% sequentially versus expectation of 1% fall, and crude sales were down 2% versus expectation of increase. Even apart from weak earnings, even company has cut FY25 crude production target. Now it's expecting crude production at 3.48 to 3.49 MT versus earlier target of 3.60 MT. So that's the reason I'm going with red for Oil India. Second is Amar Raja. Company has reported operationally weak set of earnings. Margin is slipped
below the targeted level of 14%. Now, adjusted profit was down 21%, EBITDA was down 4%, and margin has come in at 13.1% versus 15.1% in the same quarter last year. And company says margin was impacted due to fuel and power purchase cost adjustment recovery that was approved by Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission, and that has led to increase in electricity expenses, and that was the reason margin was impacted. And because of that, I'm going with red for Amar Raja as well. So both red for Oil India as well as Amar Raja. Okay, it's not looking too good for these two in the third quarter. Got it, Sudarshan. Thanks very much. Let's move on to Fortis Healthcare. Vinny is tracking these numbers. Vinny, morning, looking healthy? Absolutely. A strong set of numbers that has come in from the company in Q3 of FY25. Strong growth in terms of revenue, 15% growth. Margin seeing a very good expansion of around 250 to 300 basis points. So yes, the expansion mainly in margins is also something that is leading to a strong operational performance. Now, revenue growth, why is that seeing such a good growth? The hospital business, which accounts for more than 84-85% around of the revenues, has done quite well for the company. They've seen a good growth in ARPOB also of around 9.9% for the hospital business. So all in all, good numbers coming in from the hospital business side. Occupancy that has improved to 67% versus 64% last year. International patients revenue seen a growth of around 17% to 132 crores, as well as the focus specialties of the company. So neuroscience or robotic surgeries, that has also seen a good growth. That is better margins for the company as well. If that sees a good growth, that leads to an improvement in terms of margins. Both of these have improved. By neuroscience has seen a good growth of around 23%, while robotic surgeries has seen a growth of 77% on a year-on-year basis. So good performance on that front as well. And diagnostic business, that's a bit subdued, but that continues to see recovery, and that is what we're watching out for. We're expecting green for Fortis Healthcare. Okay, all right, Vinny, thanks a lot for that. Let's hop across to Vamakshi. She's going to tell us about Honeywell's numbers. Vamakshi, a little bit of a subdued set? Well, absolutely, Nigel. A weak set coming in for Honeywell. When you look at the revenue, that's on an uptick of only 2% on a year-on-year basis. This is much lower than what the street was anticipating. The cost of goods sold has seen a much higher jump of almost 14%, putting pressure on the margins. EBITDA margin has seen a decline of almost 198 basis points to 13%, and the net profit too is seeing an uptick of only 3%, but most of this uptick in the net profit is being driven by other income, which saw a very sharp jump of almost 78%. But overall, when we look at the numbers from Honeywell, a weak set mix, it's a miss as compared to street expectations. In addition to that, there's a note that came in from Novama. They say that intense competition, persisting supply chain challenges, and adverse product mix continue to be negative catalysts for the company. They've gone ahead and trimmed their FY25, 26, and 27 estimates by 7%, 8%, and 9% respectively. And given that they've retained a reduced rating on the counter, cut their target price to 36,675 rupees per share. So overall, I'm going with the red for Honeywell. Okay, all right, got it. Vamakshi, thanks very much for that. Let's now head across to Mangalam to figure out if delivery has been on the mark or not. Mangalam? It's actually not been on the mark. Delivery this quarter hasn't delivered, which was a seasonally strong quarter. Remember, e-commerce companies see a lot of business, but that has been eaten into by quick commerce. So delivery, the revenues were absolutely, feeble at around 8.5% in terms of growth. Remember, typically in the third quarter, the company shows mid-teen sort of growth, and that's reflected in the EBITDA as well. It's been flat. Margins have come off by 70 basis points. The net profit, yes, it has increased. It's doubled on a low base, but that's largely because depreciation has come down. And the company, remember, 2 quarters ago had changed their depreciation method. So as a result of which, the depreciation is actually lower by 66 crores. If you add that back, then even the net profit has shown a decline. What is the key disappointment out there? Express Parcel, which accounts for nearly 2/3 of their revenue, the shipments grew just 2.4%, and the margins came down from 20% to around 15%. Company did try to manage that with the other business, which is the part truckload business, where tonnage increased by 16.5%, and we also saw margins improve. But that's too small a contributor right now to mask the weakness that we saw in express delivery. So see some red on delivery today. Right, Mangalam, thank you very much for that. Well, First Source is the next one in focus. Rima is here with details. Rima, morning. Hi, good morning. So the key highlight is the company has raised the full year revenue forecast. So Q3 has been good on the top line, 8% quarter-on-quarter revenue growth, a near 30% jump year-on-year, margins expanding to 30 basis points. But as I said, FY25 revenue growth forecast is now stands at 22% at the midpoint versus 20% earlier, and margin guidance has been retained at 11 to 11.5%. Back to you.
Okay, all right, Rima, thanks for that. Well, let's go back to Vivek. He's here to tell us about Religare. Vivek, good news coming in. Well, good morning. Quite a lot of uncertainty actually has dissipated as far as Religare is concerned. One of the biggest worries, or the main agenda, in fact, as far as the AGM was concerned, was one of the points on the agenda on which shareholders were expected to vote, which was the reappointment of Dr. Rashmi Saluja as the MD or as the chairperson. Now, what's actually happened is that amidst high drama, eventually the voting has taken place, and as per the votes that was uploaded to the exchanges last evening, 97.53% of the total voters actually have rejected the reappointment of Dr. Rashmi Saluja. Now, what this means is that, number one, most likely she will have to move out of the company. Now, the second important development that has taken place is that the Supreme Court has actually asked the Berman family to go ahead and extend their open offer till February 12th. This is basically to pave way for, number one, giving Danny Gaikwad enough time, the competing open offer, to go ahead and put 600 crore as earnest money. However, this does not mean that the open offer has been approved as far as Danny Gaikwad is concerned. There are multiple regulatory approvals that are required, including SEBI, IRDAI, CCI, as well as Ministry of Finance. So one key part of the puzzle has gone. However, the open offer continues to remain in limbo, whether or not Danny Gaikwad's open offer goes through or not. Okay, all right. So let's see. The open offer battle still seems to be on, though the question of Ms. Rashmi Saluja, maybe that's been settled. At least that's what it looks like for now. Vivek, thank you very much for the details over there. Let's quickly recap our list of stocks to watch today. The ones that have positive news flow around them are LIC, NHPC, Viatech, Wabag, Fortis Healthcare, Firstsource Solutions, and Religare. The ones that have negative news around them are Oil India, Amara Raja, Honeywell, and Delivery, largely on the back of disappointing Q3 numbers. Okay, so that's our equity list for the morning. Let's move on to commodities now. We have Manisha joining in with the roundup of all the action. Manisha, good morning and happy Monday to you. To you too, Zurvi. Thank you for that. Well, I'll start with the crude oil prices because we are back above $75 the Brent prices there. Well, there are new U.S. sanctions on Iran crude exports that is keeping the prices higher. And then the U.S. may announce new global tariffs on steel and aluminum today. China tariffs on U.S. goods also take effect today. So there's just a lot to deal out with, and that is what is keeping many of these commodities on the higher side. In case of tangible commodities, you have base metal prices also trading firm. Copper is trading at a 4-month high. We've seen copper prices gain up by 7% in the previous week, which was the best weekly gain since the month of